हेलो दोस्तों, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, डेरिवेटिव निकाल रहे थे। जो एल्जेब्रिक फंक्शन के जितने कैसे डेरिवेटिव निकाला जाता है उसका आप लोगों ने फार्मूला सीखा, सब कुछ सीखा। और प्रिंसिपल मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डिफिनेशन से कैसे निकाला जाता है और फार्मूला कैसे यूज किया जाता है आपने सीखा। अब मैंने आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले लिखा है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले लिखा है। काफियों का प्रूफ भी मैंने बताया। अब थोड़ा सम कर लेते हैं। सम है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन यूजिंग डिफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो एक एक करके करते हैं। तो हमारा डेरिवेटिव निकालने का प्रिंसिपल मेथड क्या है? अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विच इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन y। अब देखिए e इक्वल टू होता है, इसके बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसी के आधार लेके, इसी को आधार बना के हम इसका सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए आंसर। हम भले ही यहाँ मैंने लिखा है बाय डिविजन मेथड, मैं दोनों से आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से फार्मूला कैसे यूज करेंगे और इससे कैसे बनाएंगे। और दूसरा आपको ये तो पता ही होगा, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज द इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन वेयर डेल्टा वाई इज द कोरस्पोंडिंग इंक्रीमेंट इन द फंक्शन। अब देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर y इक्वल टू लेट मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन 2x। देन बाय डिफिनेशन से हम इसका क्या लिमिट का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? साइन 2x। अब इसी में वैल्यू पुटअप करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये तो फंक्शन ऑफ एक्स था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फंक्शन ये होगा, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? साइन 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब इसको मैं साइन सी माइनस साइन डी करता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी। ट्रिगोनोमेट्री के आपको सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए जब डेरिवेटिव निकालोगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के। तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, अर्थात सी क्या है? एक्स, एक्स माने 2x, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लेता हूँ, प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस डी 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी एक्स प्लस डेल्टा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास यहाँ नीचे क्या है? डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ माइनस 2x प्लस 2x कटा, यहाँ नहीं कट रहा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू कॉस 4x। 2 if I take the common, then we can write 2x plus delta x divided by 2 into sine 2 delta x divided by 2. Now from here 2 to cancel, here we can cancel, that's why I have taken the common 2 to 4x 2 into 2 4x plus delta x into 2x 2 delta x whole divided by delta x. Now this can be written as 2 into cos 2x plus delta x into sin delta x. This delta x can be written as delta x
since it is in multiplication. Now if we assume this is one function, this is another function, we can take limit to the separate each function. Therefore 2 is constant, limit of a constant is constant when it is related with product with any function. Therefore limit 2 into limit delta x tends to 0 cos 2x plus delta x into limit delta x tends to 0, here sin delta x by delta x. Now just to remember, when I taught you the limits, there is a formula, limit delta x tends to 0, sin x divided by x equal to 1. Now this can be treated as 1. Therefore now here give the value of delta x, here 2 into cos 2x plus 0 into this is 1 equal to 2 into cos 2x. This is the answer. Now how can we do the same sum with the help of a formula or see here. Now this sum can be, the derivative can be evaluated using formula. Now here you can see using formula. Y equal to sin 2x. Now dy by dx sin theta, derivative of sin theta equal to cos theta. Therefore cos 2x. There is another, this is another function of algebraic function. This can be further chain rule. We can use dx into 2x equal to cos 2x into 2 equal to 2 cos 2x. Here you can see the answer is same when you use basic principal method and using formula. Here 1, 2, 3 steps. Here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steps. This is the difference between evaluating the derivative of a function using definition or using formula. Now you can do both the sides. If particularly if you have been asked the methods for finding the derivative, then you can use this definition. Otherwise you can use formula. Thank you. Next, in next period में करेंगे.